and a very good afternoon to one and all. So morning session thoda late ho jayega, ho gaya. So we are very sorry for it. And now today's lecture is MATLAB with its Simulink. Okay, so MATLAB में एक बहुत बड़ा एक toolbox है. You have Simulink attached to it, and it is a very good tool for doing simulations. So what is the need for doing all these simulations? एक है कोडिंग आप देखा होगा मॉर्निंग में, दूसरा यहाँ है ग्राफिकली यू विल बी कनेक्टिंग ऑल द block sets and you will be doing the simulations. What is the need for doing the simulation? Can anyone here tell what is the need for connecting all these things and doing the simulation? Simulation का reason क्यों करना है simulation? The idea of the system, how it's work. Okay. Anyone else? What is the need for simulations? To justify the system correction. Okay. Okay, okay, so before applying to the real thing, you want to simulate it. So the need for the simulation is, say, any real-time system you have. In that real-time system, now, when you want to do some changes, you have a motor, you want to do the speed control of it, or you have the space shuttle, you want to send it to the space, or anything whenever you want that you have a system. First of all, we don't go put the hardware and work directly, because cost is involved there. We have to spend a lot, and at the end, if it is not working out, that is a problem. And we don't know whatever we are going to do, whether it will work. There are some smart systems which has to operate, and there are times are also there. And some systems are ऐसे हैं कि वो एक दो दिन में खत्म नहीं होगा. से अभी एक यहाँ से Mars mission, you have the Mars mission. You are sending some rocket from here. It may take years to go and reach there. So that system, if you send every time and see and it fails, that so all those things has to, first of all, the real system has to be simulated. You make a, what you can say, a prototype, you can say, using these simulations, or you imitate that system. The better word is imitation. You imitate that system first of all, and you work on it, and then we do changes. उसमें थोड़ा change करके हम देखेंगे कि whether that output you are getting or not. So once we get it, what is the next stage? The simulation is okay. Now everything is okay. What you have simulated, you're getting the output. But in simulation, it will be an ideal case. But when you go in the real-time environment only, you will know, is there any friction, or is there any pollution, or what other environmental conditions. So we have to then again implement this system in the hardware, the real-time system. We have to do it. For those real-time systems, what you require is the hardware interface with these softwares what we do. So this is the overall course aim. Is also the main thing is to bring you an insight on how to follow, what is the procedure you have to follow. So one of the best tool is MATLAB Simulink, because many of us, might be many are from computer science, they do all coding, they may be familiar, but many of us find it little difficult to do the coding. And computer end, the faculty at the computer end, what you can do is, what are the applications going here? We are telling about the boxes. Like in Simulink, you have all the block sets already available. But your thing will be at the back end, do the coding for these blocks and make these blocks. So you can come out with differences. For just an example, let us take a windmill. Nowadays, if you see the windmills, they are smart windmills. They are smart systems. How do you say they are smart? क्या है smartness उसमें? Windmill smart है हम बोल रहे हैं. What is the smartness in that? What nowadays क्या है इस system में? Okay, automation is there. Okay, but still automation से भी ज़्यादा smartness क्या है? It adjusts to the environment. How it will adjust to the environment? Change the. Okay, that's good. Like little he has come to the close, like by changing its pitch and yaw. Okay, technically if we see in a windmill, it has to change its pitch and yaw according to the wind speed, and it has to give the optimal output, maximum output. And that output should
meet the demand. It is that demand is less and it is producing more, that is also not good. Or demand is more and it's producing, so it has to meet the electrical demand also. So such a system is said to be a smart system, and nowadays it is the hands of smart system. So when you are designing all these smart systems, we think of this ki windmill hai, this and this and they're now putting all these things in the block sets, connecting them together and running the system is made easy using this Simulink. So now we are just going to see a small video of this example which I told you. So here you can see the system. Okay, once again I'm just running it. So you can see this. You see that it is turning. It can change its yaw, it can change its position, and according to the wind speed, even the gearing system, that is also an important thing. Along with it, the electricity part also, the demand. So all these systems can easily be modeled using Simulink. So Simulink के साथ ये पूरा easily models कर सकते हैं. Another advantage is now 3D animations are also possible. So you can forward it, you can reverse it, and accordingly do the characterization. And even you can change the model. Say now you are doing a modeling, आप एक model को change करके से pneumatic system valve रखना है और कुछ और system रखना है. All those modeling is also easily possible using this Simulink. So easily you can test it. So such things. And now real time uski simulations at different instance and its characteristics can be studied. Along with it, you have something called the model based systems. Then you have the 3-dimensional systems. You have the control system block sets are also available where you can vary and see different things. You have image processing toolboxes and communication toolboxes available. So now after doing all these things, the next step is आपने पूरा simulate कर लिया, इसको आप next hardware में implement करना है. That is our next thing. So here for implementation, what you do, the embedded system, any type of embedded system, it may be a microcontroller, it may be an FPGA, it may be any DSP processors. In that we flash the program and then we implement it in the hardware. So you can see here we have just implemented it. So that is being put inside the windmill and the whole system is now under process. So this is the overall system of what is the thing. So this is how step by step we do it. So now we will be just seeing the Simulink. So in order to open Simulink, we will be going to say MATLAB. तो MATLAB की विंडो मैं अभी ओपन कर रही हूँ, उसमें ही Simulink भी है. So ये जो Simulink को एक्सप्लेन करने के लिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, I am just taking a simple example so that all the branch people can understand it. Okay. So ये simple example इसका है rectifier. सबने तो rectifier पढ़ा होगा और सबको पता भी होगा, मोबाइल्स तो सबके पास हैं. सो अब हमारे जो एसी सप्लाई आ रहे हैं रेक्टिफाई होके डीसी में आके चार्जर हो, सो एवरीवन नोज इट. सो ऐसे एक सिंपल रेक्टिफायर का एग्जांपल लेके आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू हाउ टू डू द Simulink. बिकॉज Simulink का बेसिक्स आपको बताना है. मेरा रेक्टिफायर बताना आपका काम नहीं है, आपको Simulink का बेसिक्स मुझे बताना है. सो Simulink के मेन बेसिक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉइंग डिफरेंट ब्लॉक सेट्स बताना है और हाउ टू मेक अ subsystem. How to make a subsystem. After making the subsystem, how to mask a subsystem. Okay, mask a subsystem. That concept also we will see. After that, how to add coding into it. So MATLAB में तो मॉर्निंग आपने बहुत कोडिंग्स देखा होगा, उस कोडिंग को यहाँ कैसे Simulink में कैसे लेके आएंगे. सो अभी यहाँ तक हमने पढ़ लिया, देन इस सिस्टम को कैसे हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करना है हम आगे देखेंगे. सो ये कोडिंग करने का क्या एडवांटेज है. Say when you want to add coding into Simulink, say now you have done a system. आपके पास जो भी मॉडल है, you have performed it. It may be any communication model, or it may be any tank system, or it may be any space application. All the system is there. आपका main system plant is there. You have the controller, and you have done all these systems. इसके step by step simulations हम first देखेंगे. Okay. Then once everything is over, then we go for
implementing it, hardware implementation हम देखेंगे. So that is the step by step thing what we are going to do. So first of all उसको explain करने के लिए I am just going to take a control rectifier and I'll be explaining it. So before that, how to go to this Simulink window? Simulink की window में कैसे जाएंगे? So उसके लिए एक है कि here you can give Simulink. ऐसे you can just type Simulink here. I think that wire, उसमें एक wire, okay इसमें है, okay उसमें है. So this Simulink you can just type, you enter it, the Simulink library will open. Or can you see an icon here? This pink color icon. So you can just use this pink color icon. So this is the pink color icon here. You can see this pink color icon. Or either you can use, click on that pink color icon and you can get inside. Or what you can do is go to this file. In file you go to new. In this new you go to model. Okay. So this also you can just see. You can have to go to file, then after file you will go to new and then model. So like that also you can go into it. Okay. So once again I'm just showing how to go into Simulink. Go to file, go to new and go to model and click this. Your model window will open. अभी आपका model window open होके आ जाएगा. So now I just want to know, you are working on MATLAB. What is the latest version of MATLAB which is available now? And what is the latest version of Simulink? (2015) 2015 A or B? 2015 B, but it is a name. What is the version I am asking? For that version, the name is 2015. The version of MATLAB which is available is 8.6. The latest version is 8.6, that is 2015B. Okay, it was launched in I think March में एक launch होता है, एक September और November में होता है. So there are two things. So it is 2015B and 8.6 is the version. Similarly, the Simulink version is, it is 8.6. Simulink का latest version is 8.6. आएगा model because it is giving कि firewall has blocked some. डायरेक्ट है बट अभी एक मैंने जब विंडो ओपन किया इट इज गिविंग मी द थिंग कि फायरवॉल हैज ब्लॉक्ड योर, सो आई अलाउ एक्सेस मैंने दिया है बट स्टिल इट डिडंट कम. So once this window opens, we have to start doing the modeling. So before that, let it open, it is taking little time. Before that, I just want to explain you the concept. Yeah, it has opened. So this is the model window where we are going to do the modeling. Okay. So here, if you see, inside this model window, you have this pink icon again, which the library icon which I showed you before. Once again, I can just show you. So this is the icon. Okay. So if you click on this icon, this icon ko click kiya to the library window will open. So this is the library. Okay, and this Simulink, if you see, it has a very rich library with almost all the elements. That is the advantage of this MATLAB over other softwares. You have LabVIEW, you have other multisim, and you have number of softwares. But the main advantage is in any field. If it is in electronics, say sim electronics is there. If it is mechanical, sim hydraulics, sim mechanics, all those things they update. As a version comes, if you go to 2015B, abhi like pehle tak to renewable energy mein you have only wind system. Now the latest system, if you see, even you have the PV systems, you have the wind systems, you have the fuel cells, everything is available. So they update their library. That is a very important feature of this MATLAB. So those who are doing research, for them it is a
very good boon. You can say कि most of the system which you want is already available. उसमें जाके आपका system again develop करने का जरूरत नहीं है इसमें. So that is the advantage. So here you can see you have the different library blocks. Simulink का general libraries हैं, aerospace block sets का है, communication system का है, computer vision, control system blocks, DSP system blocks, embedded coders, fuzzy logic toolbox. So ऐसे बहुत सारा है. So like we will be seeing the other things also different days में से fuzzy logic neural network वाला आ गया तो you will be going to those block sets also. So today the example which I am going to show for Simulink, you will be going to this sim power system के block में we will be taking some elements and we will be seeing all the basics. The basics are same for all the block sets. Okay? उसमें भी मैं दिखाऊंगी कि fuzzy block को यहाँ कैसे Simulink में लेके आना है, neural block को कैसे लेके आना है. All those things we will be seeing step by step. So this sim power system we will be seeing. Sim electronics is also there. So sim electronics also you have the sensors, semiconductors, passive elements. All these things are available. Okay. So here these are the different blocks what we have. Excuse me, madam. Hello, sir. Hello. Please, you should speak slowly because you are speaking very fast. We are not getting. Okay, sir. Okay. Thank you. Thank you. Now I am just going to explain the concept. First of all, what we are going to simulate. Then we will go for simulation. Okay. So first of all, let me explain you the concept. So for a concept explanation, as I already told you, I am taking here a rectifier. So ये एक rectifier है, rectifier का circuit है. इस rectifier के circuit में first हम यहाँ, as we already know a rectifier, यहाँ हम AC supply देंगे और हमको मिलेगा output में DC. Okay, so ऐसे pulsating DC मिलेगा, pure DC नहीं मिलेगा, ऐसे pulsating DC हमको output में मिलेगा. So ये हमारा aim है. So इसके लिए first we have thyristors. यहाँ diode भी डाल सकते हैं. यहाँ हम thyristors डाला है. They are said to be the control thyristors. So let me keep this as T1 and the next thyristor is हमका है T2. Next thyristor is T3 and one more thyristor I am keeping here as T4. 4 thyristors मैंने ले लिया. ओके, वाई आई टुक थायरिस्टर्स आपको पीछे पता चल जाएगा. मुझे मास्किंग दिखाने के लिए वो कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आई वांट टू शो यू स्टेप बाय स्टेप. इसलिए मैंने अभी यहाँ थायरिस्टर ले, डायोड ले लिया तो उसमें कुछ वेरी नहीं कर सकते हैं, इसमें पैरामीटर्स भी वेरी कर सकते हैं. दैट्स द एग्जांपल, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस एग्जांपल. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज व्हाट इज दिस एक्चुअली. दिस सिस्टम इज अ full bridge control rectifier. So this is a full bridge control rectifier. So in order to do this, first मैं उसका आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. हमने जो इनपुट दिया है it is a AC input. So you can see here this is an AC input. और अभी हम इसमें DC लेके आना है. So we have to do firing first. So firing करने के लिए हमने two types of fire, 2 times we have to like दो thyristors को at a time fire करना है. So this T1 and T3 will not be fired at the same time because they will get shorted. T2 and T4 will not be fired at the same time, it will get shorted. So T1 and T4 को same firing देना है और T3 and T2 को same firing देना है. So firing pulse हम first देंगे, इस thyristor के लिए firing pulse देना है. Okay, and same firing pulse you will be giving it for T4 also. यहाँ हम firing pulse देंगे और उस सेम फायरिंग पल्स को T1 एंड T4 में देंगे. सिमिलरली हम फायरिंग पल्स देंगे हमारा T3 को. ओके, यहाँ हम T3 को फायरिंग पल्स देंगे और उस T3 के जो फायरिंग पल्स है T2 में भी हम फायरिंग पल्स देंगे. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन. सो अभी हमको फायर करने के लिए फर्स्ट थायरिस्टर को लेट अस से वी आर फायरिंग एट सम 45 डिग्रीज. 45 डिग्रीज में इसको फायर करना है T1 एंड T4 को. So what input will you give it to the computer? कंप्यूटर को 45 डिग्रीज बोला तो पता नहीं चलेगा. So in terms of what you have to give? In terms of time you have to give. So in terms of time में देने के लिए
how will we know what is 45 degrees? What is the time? So एक cycle कितना है? It is 50 hertz, is it? So आपका 50 hertz है. So 50 hertz supply. So that is equal to 1 by the timing is 20 milliseconds. Okay, 20 milliseconds is your timing. So आपका 20 milliseconds है. This is total one cycle का timing है. So for half cycle it is 10 milliseconds. So 90 degrees है तो it is 5 milliseconds. हमको चाहिए 45 degrees. So it is 2.5. So around here the thing which we give is 2.5 milliseconds का एक delay देके firing. Then when should you repeat this pulse? जो this is for firing for your T1 and T4. इस दोनों का firing है. T1 and T4 will be fired here. When should you repeat this firing pulse? After one full cycle, is it? So T1 and T2 have to be fired at this point, T1 and T4. So it is one full cycle. आप इसको again fire करना है. So ये जो distance है that is around 20 milliseconds. इसका जो gap है 20 milliseconds. Is there any doubt? So this gap is आपका ये जो gap है it is 20 milliseconds. You have to repeat this pulse after 20 milliseconds. Similarly, next जो thyristor है T2 and T3 which is forward bias during the negative half cycle, उसको हम fire करेंगे यहाँ इस point में. So what will be the firing angle? 12.25 because यहाँ से 2.5 है और 10 milliseconds है half cycle का. हमारा half cycle यहाँ तक है, is it? So that is around 10 milliseconds. फिर उसके बाद ये जो delay है 2.5. So the delay what you give here is 12.5 milliseconds का delay हम देना है यहाँ. ये जो delay है 12.5 milliseconds. So once again I am repeating, this is our AC input what you give. इस AC input को DC में convert करना है. Any application, first of all we have to study the system, okay, and we have to see what are the input parameters you have to give. So that is what we are seeing. We have studied, we are giving an input here, sine wave, it is 50 hertz. So 50 hertz is nothing but 20 milliseconds and half cycle is 10 milliseconds. We have to fire at 45 degrees. 45 degrees is nothing but your 2.5 milliseconds. Okay, हमने calculate कर दिया. So two thyristors T1 and T4 will be fired at 2.5, that is 45 degrees. Then it will be repeated after every 20 milliseconds. Similarly, the thyristors आपका T2 and T3 जो thyristors हैं उसको हमने fire किया है 12.5 milliseconds and it has to repeat it again same way. उसको repeat करना है आपको 20 milliseconds के बाद. So यहाँ इसको भी हम 20 milliseconds के बाद इसको हम repeat करेंगे. So this is what we are going to do it. So ऐसे करने से हमका output क्या मिलेगा? तो यहाँ से आपको जो T1 and T4 fire हो रहे हैं उसके accordingly you will get a waveform like this. Again 45 degrees के बाद this is due to T2 and T3. Then again due to T1 and T4 आपको ऐसे मिलेगा. So this is due to the delay of firing. Firing delay के कारण आपको ऐसे and इसकी average DC आप कर सकते हैं. Okay, so this is your application. Now we want to simulate the same system using Simulink. ये same system अभी हम Simulink में करने वाले हैं. So this is our Simulink का जो विंडो हमने ले लिया. इसमें हमको thyristors चाहिए, जो हमारा सोर्स चाहिए, all those things are required. I'm going to the library. So library में you have this sim power system. Simscape के अंदर होगा. Sorry, sim power system I've already turned on here. This is a sim power system. So sim power system के अंदर you can see here sim power system के अंदर you have what is called the sim electronics. So sim electronics में all these thyristors and all these things are there. So हम मुझे जो thyristor चाहिए उसको add to untitled. So ये automatically it will add to the untitled block. So आपका untitled में वो thyristor आ गया.
ओके सो इस थायरिस्टर को मैं अभी कंट्रोल आर करके आई एम रोटेटिंग इट, कंट्रोल आर आई एम प्रेसिंग, सो व्हेन आई एम प्रेसिंग कंट्रोल आर इट इज ऑटोमेटिकली टर्न्ड. सो इसको मैं थोड़ा व्यू जूम इन कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली. सो आई थिंक इट इज विजिबल नाउ. ओके सो आई वांट हाउ मेनी सच थायरिस्टर्स? So control C and control V, I am just pasting it. Similarly, I want 4. So again एक और paste कर दिया हमने. और एक और paste कर दिया. So 4 thyristors मिल गया. इसको connect करना है. So I am just connecting it. 4 thyristors are now connected. Next मुझे चाहिए source. So source लेने के लिए I am going to my electrical source. So I am taking the AC voltage source. Okay. So our main aim is for the basics. So you need not worry if it is not of your field also. You just see what are the basic concepts which we are going to cover. So this AC I am just connecting it here. AC voltage source. और अभी हमको elements भी चाहिए. So you have something called the elements. So I can just show you, these are the elements. So elements में different parameters हैं. I want an RLC branch. So I am just adding it to this, adding to the system. So I have got the RLC branch also. So I am just rotating it. And RLC में so you have resistors, capacitors, inductors. तो इसको double click किया तो आपको जो parameter window open हो जाएगा. तो इस parameters window से जाके आप इसको सेट कर सकते हैं. आपको चाहिए R चाहिए, L चाहिए, C चाहिए, क्या है. तो हम RL चूज कर दिया अभी. तो RL चूज करने से नाउ दिस कैपेसिटर विंडो हैज गॉन, ओनली R एंड इंडक्टेंस आर देयर. ओके ये दो पैरामीटर हैं. सो लेट मी गिव सम वैल्यू. लेट मी टेक इट एज 40 ओम्स रेसिस्टर एंड जो हमारा इंडक्टेंस है लेट मी टेक इट एज 80 मिली हेनरी. सो अप्लाई ओके. Okay, I have just applied the resistor and inductor value मैंने fix कर लिया and I have to just connect it. मेरा load भी हो गया, मेरा source भी हो गया. So source का value है यहाँ 230 volts and हमारा supply है 50 hertz. So I am just connecting it as 50, apply and okay. So you can see here I have just connected 230 volts and 50 hertz, apply and okay. Okay, so till then it's clear. It's very simple. Now what we have to do next, we have to give the firing pulse. Okay, so firing pulse, I'm just going to the Simulink. So you can see here Simulink की general इसमें चले गए मैं और उस Simulink के इसमें नीचे आके you have sources. Source में again if you go you can see the pulse generators. Okay. So इस pulse generator को again add to block. So pulse generator यहाँ add हो गया. So control C, I am just copying it and control V paste कर दिया. Okay. So this firing pulse I am giving it here. Okay, firing pulse यहाँ भी दे दिया और इस दो थायरिस्टर को देना है वो भी मैंने यहां से लेके जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सेम सर्क्यूट आई हैव डन हियर. ओके सो इसका वैल्यूज एंटर करना है. सो फर्स्ट थायरिस्टर T1 एंड T4 के लिए हम क्या देंगे, हमारा टाइम पीरियड कब रिपीट होना चाहिए, इट इज 20 मिली सेकेंड्स. 0.02 दे दिया इन द सेंस 1 2 3 20 मिली सेकेंड्स. फेज डिले कितना होना चाहिए, 2.5 हमने लिया है सो इट इज 0.025. So this is 25 हो गया 0.00025. So it is 1 2 3 2.5 milliseconds. तो ऊपर का हो गया. नीचे वाला इसके भी 20 milliseconds है आपका पीरियड एंड फेज डिले कितना था 12.5. So 12.5 is 0.0125. So 1 2 3 12.5 we have just applied. So I am just zooming it and showing you the value. हमने just ये pulse generator में क्या क्या किया है, पीरियड एंटर कर दिया 0.02 एंड पल्स विथ वाला यहाँ प्रॉब्लम नहीं है.
when you do it real time, hardware में करते समय you have to see the thyristor. Thyristor का turn on time है. When the thyristor goes to the turn on time, like the latching current, जो anode current है, it will rise and वो latching current की जब ऊपर आ जाएंगे, वो conduction में चले जाएंगे. So in that place, pulse width is very important. But when you're doing simulation, this is not a problem. आपने 5% दिया तो भी it will work. It will give you, thyristor will get turned on. But real time when you do, you just see the data sheet. आपके real time parameters कैसे हैं, इसमें around 10% width देना है तो you have to give it. Similarly, यहाँ amplitude also. Amplitude is not a matter when you're bringing it to the hardware. The one we have given. So in the hardware logic, it is 0 and से माइक्रोकंट्रोलर यूज कर रहे हैं, 0 and 5 volts है ना. आप ऑन रखा है तो 5 volts आ जाएगा आउटपुट में माइक्रोकंट्रोलर के पिन में, और आपने 0 रखा तो सॉरी आपके ऑफ है तो 0 है. सो इट इज नॉट पल्स amplitude is also not going to give you any effect here. So I'm just giving apply and okay. Okay, so this pulse with generator का भी values हमने enter किया. Now we want to see the output where you will be seeing, you will go to the sync. So this, so यहाँ sync में जाके आप यहाँ scope है, this scope you have to use it. So add to untitled हमने दे दिया. So it is added here. So just double click on this scope, and how many inputs you want, accordingly you can set this parameter. So here आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या scopes में parameter हम set करना है. ये एक है number of axes, मुझे चाहिए कितना axis, let me keep it as some 5 axes. Okay, मुझे 5 inputs देना है. And you can see here something called decimation. What is this decimation? Decimation क्या है? किसी ने कहा, both people, many of you have used it. What is this decimation? Breaking into parts. What do you mean by breaking into parts? Sampling you're saying. कहाँ useful होगा? Why do you want this decimation? So here if you see the sampling, this is the sampling only. Every millisecond it takes a data. आपने से अभी 10 दे दिया, every 10 milliseconds it will take a data. Okay, when you are running high-end programs, many times you would have seen आपकी MATLAB hang हो जाएगा. और sometimes आपका पूरा result नहीं मिलेगा. You have given a timing for 0 to 10 seconds. आपका 5 seconds होने के बाद memory out, because it is taking so many samples and it is storing in the memory. So your MATLAB memory will go out and it will hang there, or you will not get the whole result. In such a place, if you feel कि 10 second में एक data लेने से भी आपका output same मिल रहा है, then you can give here 10 decimation. So we will try that also. First decimation में let it go, then we will try that. So apply, okay. So ये है अभी आपको 5 inputs यहाँ मिल गया. Okay, so now we have to connect this. So जो pulse है, it is signal level. जो इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल में है, डायरेक्टली सिमुलिंग में आप कनेक्ट कर सकते हैं, स्कोप में कनेक्ट कर सकते हैं. बट जो भी इलेक्ट्रिकल से आपने लिया है उसके लिए वोल्ट मीटर्स एंड अमीटर्स आर रिक्वायर्ड. ओके, सो वोल्ट मीटर्स एंड अमीटर्स लेने के लिए हम यहाँ अगेन लाइब्रेरी में जा रहे हैं. वी विल गो टू दी सिम पावर सिस्टम. सो यू कैन सी हियर सिम पावर सिस्टम में यू हैव मेजरमेंट्स. सो इस मेजरमेंट्स क्लिक करने से यू विल गेट दिस वोल्ट मीटर्स एंड अमीटर्स. सो यहाँ अमीटर है, एड टू ब्लॉक. सिमिलरली मुझे अमीटर यहाँ कनेक्ट करना है. सिमिलरली आई वांट दी वोल्ट मीटर, सेम वे वोल्ट मीटर के ऊपर भी रख के आई कैन ड्रैग इट एंड पुट इट हियर, और यू कैन इवन ऐड टू ब्लॉक. सो एक वोल्ट मीटर हो गया. मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल आर हियर. सो आपने सिम इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ एलिमेंट्स ले लिया और स्कोप में कनेक्ट करना है. व्हाट विल यू डू? सिम इलेक्ट्रॉनिक्स यू हैव वर्कड, सेंसर्स एंड ऑल? नो, उसमें भी बहुत सारा like sensors, transducers, you have flip-flops and all those things, op-amps. So उसमें when you want to connect to scope, what will you do? Ground तो इसमें भी चाहिए, like wherever it is required to say. There na the block you require something called the P to S conversion, because all the sim electronics, I can just show you here. जो भी सिम इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्लॉक है, सिम इलेक्ट्रॉनिक्स ये है सिम इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्लॉक. सो ये जो ब्लॉक्स में जो भी एलिमेंट्स आप कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ P to S
I can just show you in the help also. I'm just going to the demo and just opening a sim electronics का block. उसमें P to S है. What is this P to S? Anybody know? I'm just opening the sim electronics का examples निकाल रही हूँ. That's all. You need not worry. So here, whenever you take elements from sim electronics, यहाँ एक sim electronics का मॉडल है. So आप जो भी मॉडल्स आपको ओपन करने हैं, आप सिमुलिंग के हेल्प में चले जाना. ओके, हेल्प में जाके दैट ऑल्सो आई विल जस्ट शो यू वंस अगेन एट द एंड. आई विल शो यू हेल्प में जाके आपको जो भी ब्लॉक्स सिम इलेक्ट्रॉनिक्स का है वहां के डेमोज में चले जाना. डेमोज में चले गया तो यू हैव हियर व्हाट इज कॉल्ड द ओपन दिस मॉडल. इस मॉडल के पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, आप पूरा रीड करके देख सकते हैं. यहाँ साइड में ओपन दिस मॉडल, ये ओपन दिस मॉडल ओपन कर दिया तो this model will open. This is the model which is opened here. So here you can see, आप यहाँ जो सिम इलेक्ट्रॉनिक्स के एक ब्लॉक मैंने ओपन किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो करंट स्कोप है, स्कोप कनेक्ट करने के बाद से दे हैव कनेक्टेड हियर अ करंट सेंसर. वो स्कोप कनेक्ट करने के पहले यहाँ P to S कन्वर्शन है, PS to S. दैट इज all these sim electronics का जो भी blocks हैं, they have made it using PSpice. You would have many electronics people will know they have done this model using PSpice. PSpice को इसके साथ link करके they have made it. So that's why यहाँ PSpice to Simulink conversion block is required. So जो भी electronics के लोग हैं, जो basic principles में बताने वाले हैं, यहाँ भी same है, mechanical के लिए भी same है, everything is the same. But there are some small changes. In the sense, when you are connecting a block which is from sim electronics, you have to use this PS to Simulink conversion block. That is important. Otherwise, the concepts are same. I will be telling you each and everything what we have to do. Okay, is it clear? So, यहाँ आप वो PS to S conversion block डालना है. Otherwise it is not necessary. So here it is for sim power electronics or sim power system में वो PS to S conversion is not required. You can directly connect it. So I am just connecting here an ammeter, and as we all know, ammeters we connected in series, and जो voltmeters हैं we connected in parallel. So मैंने यहाँ एक voltmeter को भी parallelly load किया, cross connect कर लिया, और मुझे एक और voltmeter चाहिए, so उसको मैंने यहाँ connect कर लिया. Okay, so this is voltmeter. I am connecting it to the source. 1 voltmeter I have connected in the load and एक ammeter मैंने load के series में connect कर लिया. Now I have to connect all these blocks to the scope. So मैं मेरा output देखने के लिए जो input में दे रही हूँ, AC input, उसको first block में दे रही हूँ. This मेरा जो load है उसका output देख रही हूँ. फिर जो करंट है उसका आउटपुट देख रही हूं. फिर मुझे चाहिए जो मेरा पल्स है, पल्स को भी मुझे देखना है. 2 पल्स है मुझे, सो दोनों पल्स देखना है. ओके, सो ये सब मैंने कनेक्ट कर लिया. अभी प्रॉब्लम देखो, इतना एक छोटा सा सर्क्यूट करने से ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया. नाउ आई डोंट नो वेयर इज द वायर गोइंग. अ न्यू पर्सन व्हेन ही कम आल्सो ही विल आल्सो गेट कंफ्यूज कि ये क्या है, इतना झंझट करके रखा है, लोड कहाँ है, सोर्स कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा है. उसके लिए हम करते हैं सब सिस्टम. इसमें जो रेक्टिफायर है उसको पूरा मैं सेलेक्ट करके एक सब सिस्टम बना सकती हूँ, सो दैट people those who want to know what is a rectifier, they will go and double click on it, they will go and see inside what is the circuit given. So that is the reason why we do the subsystem. So here subsystem भी मैं बना के दिखाऊंगी. अभी एक बार ये रन करके देख लेंगे कि रन हो रहे हैं नहीं. So इसमें एक ही चीज है, जो सिम पावर सिस्टम के ब्लॉक्स ले रहे हैं,
they have to put here something called the power GUI. It is very important. So here we are going to the library. उसमें हम जाएंगे sim power system. sim power system में you call what is called the power GUI. So ये power GUI block क्या है? Analysis करने के लिए है. बहुत सारा analysis. They have done FFT analysis, load flow analysis, LTI viewers, control system block sets का analysis. All these things have already been, they have like when you want to do fast Fourier transform, FFT, all these things already they have written the program and they have made a GUI and उस GUI के अंदर ऐसे दिया है. So you can see here, when you double click this, that GUI will open. So I've just double clicked on this power GUI. So this is the GUI. I think you can all see this GUI. So configuration parameter, they have steady state voltage analysis, load flow analysis, FFT analysis, hysteresis design tool. So बहुत सारा parameters इसमें they have given. So when they did this, what they did is, yes, power GUI, all these blocks in sim power system, they have done the state space model. We have learned two models. One is the transfer function model, one is the state space model. Transfer function model क्या देंगे? Relation of output and input. Okay, Laplace transform output by input. So it just gives the relation of output and input. But intermediate states, you have capacitors, you have inductors. So how much the capacitor has charged, inductor has charged, all those things you cannot see using the transfer function model. For that you go for state space model. So here what they've done, everything they've converted into state space model so that intermediate analysis can also be done. And they have made programs, they have put it in the GUI and they have given it. Since all these blocks in this sim power system are linked to this power GUI, if you don't put the power GUI there, it will not get a link. So it will give you an error key. There is something missing. There is something missing. So if you have taken even one block from this sim power system block set, you have to put this power GUI. But when you're working with sim electronics, you're working with sim hydraulics or simply Simulink, you need not put this power GUI. Okay, without power GUI itself, it will run properly. Okay, this is the thing. So now I'm just going to run it. So here you have something called the simulation parameters. Once again, I'll just show you. So यहाँ आप ऊपर चले गए simulation में. So simulation में चले गया तो you have something called configuration parameters. So ये configuration parameters में चले जाना. So it is initializing. So this is the configuration parameter window. So उसमें हम देखेंगे अभी. So उसमें start time है और stop time है. कब ये simulation start करना है, कब stop करना है. So let us keep it as some 0.2 में रख रही हूँ. Okay, 20 milliseconds. So इसमें अच्छा दिख सकता है thing. Then you have something called variable speed and fixed speed. So fixed step. So fixed step जब जाएंगे आप hardware connect करना है तो. So आप Arduino और DSpace कुछ भी आप connect कर दिया तो भी automatically MATLAB will understand, it will go into fixed step. Okay, so that is one thing. You will use fixed step only when you are doing hardware simulations. Otherwise, you can go for this variable step. And what is this ODE? Ordinary differential equation, at which back end में all these simulations we are seeing, back end में कुछ program run होके आपको results दे रहे हैं. So these are these ordinary differential equation 23. They have different methods by which you can solve it. So if your program is running slow, you can try some other ODE and you can see whether it is running like at a higher speed. And इसमें एक है ODE 3. So when you go for variables fixed step, hardware जब भी connect किया, fixed कर दिया, ये automatically it will go into ODE 3. Hardware it will go into ODE 3. And इसमें then you have to fixed time step size देना है. हार्डवेयर जब भी आप कनेक्ट कर रहे हैं आप फिक्सेड डालेंगे, फिक्सेड डालते समय ODE 3 में चले जाएगा एंड यू हैव टू गिव द फंडामेंटल सैम्पलिंग टाइम. सो ये फंडामेंटल सैम्पलिंग टाइम हियर डिपेंड्स ऑन योर हार्डवेयर. सो यू आर यूजिंग अ माइक्रो कंट्रोलर ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. तो उसमें आप उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली यहाँ आप फिक्सेड स्टेप साइज देना है. इट डिपेंड्स ऑन योर हार्डवेयर विच यू आर कनेक्टिंग. ओके, apart from that, when you are connecting hardware, you go for optimization. इसमें कुछ changes करना पड़ेगा. आप code generation में जाएंगे और जो भी hardware आप connect कर रहे हैं, that will be generating here the C code.
आप जो भी हार्डवेयर कनेक्ट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सी कोड जनरेट करके इट विल फ्लैश इट इनटू योर माइक्रो कंट्रोलर और जो भी हार्डवेयर. तो यहाँ सी और सी प्लस प्लस भी हो सकते हैं. आप चाहिए तो आपको सी प्लस प्लस में कोड जनरेट करना है तो वो भी जनरेट कर सकते हैं. बट बाई डिफॉल्ट व्हेन यू आर कनेक्टिंग अ हार्डवेयर इट विल जनरेट द सी कोड एंड इट विल डू इट. एंड अदरवाइज से आपने कुछ FPGA controllers connect किए हैं, VHDL or Verilog codes it will generate and you can burn it into your FPGA devices. So these are the different hardware things. So when we do hardware, you will come to know it. So this window is the solver. So हमने solver में जाके हमने configuration parameter window है and हमने 0 to 0.2 का time set किया. हमारा simulation है, variable steps हमने रख दिया. OD 45 is the thing. So apply and OK. So this is the configuration parameter which you have to set once you want to run the program. This is in all the toolboxes. You have to do this. So now I am starting the simulation. The simulation start कर लिया हमारा. Once we start the simulation, so now it has run and I can see the output here. So I can see the output. So this is the output which is visible here. Okay, can you see the output here? So this is the AC input we gave. This is the DC. You have an inductor, so that's why you get a negative portion. Okay, यहाँ negative portion आ रहा है. फिर this is the DC output what you got, and these are the firing pulses what we have got. 45 degrees का firing pulse, and here 180 plus 45 का जो firing pulse हमको मिला है. This is the thing. So one thing is here, if you see. The data here, like say black and white environment में है, and when you want to present papers in IEEE transactions or कुछ SCI journals, they don't allow you this. They say they want it in white background with all the x-axis labeling and all those things has to be done. So in that case, you can take this data to workspace and वहाँ जाके आप easily plot कर सकते हैं. So that also we will see. And एक और चीज है इसमें, when you want to do these FFT analysis and all, इसकी जो scope का data है, that you have to go to when you want to do analysis, like analysis करना है, go to scope parameters. Once again I'll show because might be at the center I have gone little fast, उनको समझ में नहीं आएगा. Once again when you want to do analysis, say FFT analysis आपको करना है, so what you have to do, you have to go to this scope, double click this scope and go to parameters. Parameters में history में चले जाना और लिमिटेड डेटा पॉइंट 5000 दिया है ना, उसको मैं रिमूव कर रही हूँ सो दैट पूरा डेटा मुझे आ जाएगा. और दूसरा है कि सेव डेटा टू वर्क स्पेस. आई हैव टू सेव द डेटा टू वर्क स्पेस एंड इट शुड बी इन द फॉर्म स्ट्रक्चर विद टाइम. ओके, सो जो भी डेटा यहाँ स्कोप में आ रहे हैं इट विल गो इनटू आवर वर्क स्पेस. अप्लाई ओके. ओके, नाउ I'm just closing this and again I'm running. So now my data will go to my workspace. Okay, my data has gone to the workspace. So workspace में भी जाके, and now I told you अभी workspace में चले गया, ये Power GUI में भी आ जाएगा. So now I'm going to this FFT analysis. So I think you can see here the FFT analysis. So I'm just clicking the FFT analysis. So FFT analysis में fast Fourier transform. Okay, so when you want to see harmonics, आपके system में कितना harmonics हैं, then you go into the frequency domain and do the analysis. So this is the fast Fourier transform analysis. So हमें एक this is the DC output मिला है. So DC में harmonics देखा तो बहुत ज़्यादा आएगा. AC pure AC में आप देखते समय आपको ठीक आएगा. So here से 0 time and 1 cycle ले लिया and मेरा simulation था 50 Hertz का. So I have just done 50 Hertz. Bar graph if you want to see, you can do and just give display. So it will display the output. So here you can see it is very high because DC का harmonics देख लिया तो DC ने AC है तो you will get the proper harmonics. हम AC में भी अभी देख लेंगे. तो this is the DC output and it is full of harmonics है because यहाँ आप देख सकते हैं आपका ये जो cycle है, it is one cycle is something like this. So हम एक AC waveform का भी देखेंगे. जो AC एक waveform है. So this display the bar graph. So हम देख सकते हैं इस केस में AC सिग्नल में 0.66 is the THD what you get here. So ऐसे ही आपको चाहिए तो से लाइन लिस्ट भी डाल के you can see
what is the harmonic, say DC component कितना है, first harmonic कितना है, second harmonic कितना है, 0.47, third harmonics is 0.26. So all these data also you can get. And if you want the data, go to edit, edit में जाके figure properties में जाके इसके ऊपर क्लिक कर लेना, ये जो विंडो में, तो इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ आपको पूरा डेटा मिल जाएगा. ये पूरा आप सेलेक्ट करके वर्ड में लेके जाके आपको सेकेंड हार्मोनिक्स कितना है, फोर्थ हार्मोनिक्स, ऑल दोस थिंग्स यू कैन डू. इफ यू वांट, से आपको अभी यू वांट टू प्रेजेंट दिस इन पेपर, आपने हार्मोनिक्स ले आए, इसको एनलार्ज करके यू कैन डू एवरीथिंग. यू कैन चेंज दिस बैकग्राउंड टू व्हाइट and you can increase the thickness of this, even the bar graph and all those things. आप उसमें grid connect कर सकते हैं, से यहाँ अभी grid connect कर सकते हैं. आपको legends चाहिए तो legends डाल सकते हैं, उसको naming कर सकते हैं. So whatever thing you want to do in this, you can even increase the thickness of this, जो thickness है, time and all these things you can define here. And then take this screenshot लेके, से अभी you have snipping tool also available. Snipping tool लेके you can just snip it. इसको जितना चाहिए आप snip करके you can take it to your word. So it will come in with high resolution. आपको इसका अच्छा waveform मिल जाएगा, which will be a presentable form in your quizzes. Those who are doing research and all those things, उनके लिए helpful होगा. So this is how. Even you use LTI viewer. LTI viewer में भी आपको जो चाहिए, open this current LTI viewer. ओपन दिस करंट LTI, जो आपको जिस पैरामीटर का चाहिए उसको ओपन करके उसमें भी बोडे प्लॉट, नाइक्वेस्ट, नाइकॉल जो भी चाहिए आप उसका भी आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली. ये तो मैंने ऐसे ही ओपन किया है, बट प्लॉट कॉन्फ़िगरेशन में जाके once again I'll tell, I think I'm going little fast. So here when you want to do LTI analysis, go to use LTI viewer. LTI viewer open हो गया था, हमारे यहाँ जो भी पैरामीटर है उसका यहाँ LTI view आ जाएगा. So I can select any one thing and go to open in current LTI view. So हमको current LTI view मिल जाएगा. So this is the thing. तो उसके लिए go to edit, plot configuration. So this configuration window is opening. Okay, this configuration window में कितना चाहिए आपको, 3 चाहिए. Just select that. You want impulse input, you want to see Bode plot, you want to see Nyquist plot or Nichols plot, all these things, select it. Okay, I have just selected 3 configurations, Bode, Nichols, Nyquist, all these things I have selected, and just apply OK. So all these windows अभी open हो गया. Okay, so ये जो मैंने select किया है वो thyristor के एक particular voltage or something, that's why it is not coming properly. Otherwise आपने एक बस की bar और पूरा load ले लिया, it will show you all the, if you give an input impulse to it, what is the output coming, all those things can be seen in this LTI view. Similarly, you have other load flow analysis. If you are using power system, you can go for load flow analysis, and all the other analysis can also be, even you want to generate the report, you can generate the report. It will take little time to generate it, so I'm just skipping it. You can try it. So this is some of the thing. And now let us make a subsystem. Okay, so subsystem का दिखा देती हूँ. So मुझे subsystem बनाना है, ये simply अभी दिखाने के लिए, so let the source be there and the scope be there. All the other things I am taking into the subsystem. Okay, so just select everything. Whichever thing you want to make a subsystem, आप select कर लो, right click करो, और you have an option here, create subsystem. Okay, so आप इसमें create subsystem के option just select करना है. So वो अपने आप subsystem बना देंगे. And उसको मैं rotate कर रही हूँ. Sorry, I've just rotated it, and you can see here different. So this subsystem is nothing but my rectifier now. Okay, with load. Rectifier with load is this subsystem. So इसमें आप देखते समय बहुत सारा icons भी हैं. These icons.
Sometimes say if you are taking a program from net, इंटरनेट से आपने कुछ आपके रिसर्च के एक प्रोग्राम लिया है, उसमें अनवांटेड ब्लॉक्स भी ऐसे होगा, so उसको आप रिमूव कर सकते हैं. ये आप क्या करना है, उस ब्लॉक को डबल क्लिक करते समय the one which was there is the show measurement port, that was the measurement port, so उसको आप untick कर दो. Okay, that will get removed. Okay, like that also you can remove it if you want it, or what you can do is you can terminate it. Many times that block will not be there, so you can terminate it. Terminate करने के लिए you have to go to the library, go to this sync and go to terminator. Okay, this is the terminator block. So just take the terminator and put it inside your block. उसको terminator से आप connect कर लो. So ऐसे terminate भी कर सकते हैं. This will be very useful for you when you are taking blocks. Some other person's block लेके आपके काम पे आप include कर रहे हैं. Some inputs you need not require. आपको चाहिए कि 10 input वो लेके आए हैं, but आपके काम में उसमें 2 input ही चाहिए. So what you can do is go and terminate the other blocks. Otherwise, when you go and show it to your guide, they may ask you why are these blocks there. It is unnecessary. So you, in such a case, you can terminate these blocks. So in this case also, I am just terminating it. Unnecessary blocks, you can just remove it. Can you understand, or is it going out of your thing? Till now I told you only one concept, subsystem कैसे बनाना है. Okay, next we'll go into a big concept, it is masking the subsystem. So now I have closed this. Okay, I have closed this also. So this is the subsystem and now you can see those icons are not coming. Okay, अभी icons आपका नहीं है. अभी next क्या है? See, this is the block. मुझे when I double click this block, a window should open and it should tell me what are the input parameters. For example, this is the source. इस source को click करते समय क्या आ रहा है? एक window open हो रहा है and it is asking me what is the peak amplitude, what is the frequency, what is the sampling time. Is it? Because they have masked the system. Here you can see something called masked. That's why it is asking me. For this, what is the advantage? The person who is working in US, he will enter 110 volts and 60 hertz. 110 volts and 60 hertz. Indians will enter it as 230 volts and 50 according to the requirement. So you are giving the user a like एक option there and they can enter their own values. Similarly, here also you can mask the system. So in this rectifier, what is the value which I can change every time? कौन सा value है जो change होता है? Firing pulse 35, मैंने अभी 45 रखा था, उसको 90 लेके जाना है और 180 लेके जाना है. So आपके जो काम है, your research, whichever is the parameter which is going to change, that parameter you will be masking it. Okay, can you get it? So here for masking, which parameter you want to mask, double click on it, go into it and select and put some variable name there. Give some variable name for that. Can you understand? So what I have done, I want to mask this pulse generator में firing angle को mask करना है. मैंने वहाँ जाके I gave the parameter A there. Okay, apply. Okay. This another pulse also, I just want to go and give the parameter here as B. So now my input parameters are A and B. The system, you can vary the A and B parameters. So now you have closed everything and you have come out. इसको double click करो, this window is opening. मुझे A नहीं चाहिए. The window should come and ask me what is A and B value. For that we do something called masking. So how to do masking? Just click on the block where you want to mask, right click on it and create mask. Can you see this option, create mask? Okay, so yes, create mask के option को आप click करना है. So now I am just creating the mask. So अभी एक window open हो गया. Create mask का क्या किया था? Once again I'll tell you, this is an important thing. Just right click, go to create mask. So create mask में एक window open हो गया and I can create the mask here. So अभी हमारा ये है कि say I am doing thesis and the thing is I have made a rectifier here. मुझे rectifier की picture उसके ऊपर आना चाहिए. और I have made a transfer function. उस transfer function की equation आना चाहिए. So क्या करना है? यहाँ बहुत सारा options they have given. How you want? Say I want a patch like this here.
आप मॉर्निंग में बहुत सारा प्लॉट कमांड्स एंड ऑल दोस थिंग्स लिया होगा, सेम थिंग जो भी कमांड्स हैं यू कैन गिव इट हियर। से मैंने मुझे एक पैच चाहिए, सो वो पैच का कमांड दे दिया यहाँ, पैच ऑफ दिस, अप्लाई, एंड यू कैन जस्ट सी हियर दैट पैच विल कम हियर। आपके जो ब्लॉक सेट में अभी वो पैच आ गया। सो अभी मुझे पैच नहीं चाहिए, अभी मुझे कुछ लिखना है, ऐसे इक्वेशंस लिखना है यहाँ जो आपको दिख रहे हैं। सो व्हाट आई कैन डू, dpoly, copy, and this place I am just copying that command. So I can have this now, जो भी नंबर आपके इक्वेशन के अकॉर्डिंगली फॉर जो भी है उसका प्लॉट यू हैव टू गिव हियर, अप्लाई, and you can just see here that equation will come here. Okay, similarly what you can do, you can even give images. So यहाँ एक इमेज है, वो इमेज का कमांड आप देख सकते हैं यहाँ, दिस इज द इमेज। सो हियर यू हैव टू जस्ट गो एंड क्लिक दिस आइकॉन, आपको जो भी आपको है टेक्स्ट एंड ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट इट हियर। सो इमेज के लिए है इमेज imread b747.jpg, that is the image of a aeroplane here. So I am just copying this image का कमांड और यहाँ जाके मैं उसको पेस्ट कर रही हूँ। ओके, यहाँ जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया एंड अप्लाई, यहाँ ये आ जाएगा। ओके, सो ये इमेज कहाँ जाके हम डालेंगे, दैट इज देयर ना। तो इस इमेज को कहाँ जाके डालना है, गो टू योर प्रोग्राम फाइल्स। एवरीवन वुड हैव इंस्टॉल्ड योर प्रोग्राम फाइल्स इन कहाँ, सी ड्राइव में। सो गो टू योर कंप्यूटर, तो उसमें आप सी ड्राइव में चले जाना, आपके सी ड्राइव में यू हैव program files, you will have your program files को डबल क्लिक किया तो you have to go, all your software which is installed will be there. Go to your MATLAB का आपका 2012 का मेरा वर्जन है, so that is there. I am just clicking on that. So यहाँ again you have a lot of icons inside MATLAB. So MATLAB के अंदर I am going to toolbox के अंदर चले जाना, टूलबॉक्स में चले गया। नाउ यू जस्ट गो डाउन एंड सी, यू विल गो टू समथिंग कॉल्ड सिमुलिंक। टूलबॉक्स के अंदर आपको सिमुलिंक मिलना है, तो यहाँ है सिमुलिंक। सो सिमुलिंक के अंदर अगेन वन मोर सिमुलिंक इज देयर, एंड सो फर्स्ट वी वेंट टू सी ड्राइव, देन प्रोग्राम फाइल्स, देन वी वेंट टू मैटलैब के अंदर टूलबॉक्स के अंदर सिमुलिंक के अंदर अगेन सिमुलिंक। तो वो उस लोकेशन में जाके आपका B747 कुछ है ना, B सर्च करो, B747 आपको मिल गया। सो सेम लोकेशन में आप जो इमेज चाहिए वहां डाल देना। तो सिमिलरली एक और इमेज इसमें है, मैं अभी आपको चेंज भी करके देखते, सिमुलिंक टीम। तो सिमुलिंक टीम का भी एक पिक्चर है, सो आई हैव जस्ट अप्लाइड, so you can see that image has changed. अभी सिमुलिंक टीम का इमेज आ गया। ओके, सो जो भी इमेज चाहिए डालना है, बट वंस यू अपलोड इट, से आपने एक इमेज करके वहां डाल दिया, फर्स्ट टाइम व्हेन यू अपलोड इट विल नॉट कम, यू हैव टू टर्न ऑफ योर सिस्टम, ओके, फुल्ली शट इट डाउन एंड अगेन रिफ्रेश इट। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू टर्न ऑन इट विल कम। समटाइम्स वहां क्वेश्चन मार्क दिखाएगा। द प्रॉब्लम इज when the resolution of the image is very high, आपने हाई डेफिनेशन बहुत हाई पिक्सल वाला इमेज डाल दिया तो भी sometimes वो पिक नहीं करेगा, तो you have to decrease the resolution and put it there. Okay, so this is one thing. Now look wise तो ठीक हो गया, बट हमारा काम ये नहीं था। इसको क्लिक करते समय one window should open and it should ask me what is A and B value. So this is not now it is not masked actually. So what we are doing again, I am edit mask. Okay, because मैंने वो window close कर दिया, edit mask में चले गया, ये है मेरा मास्किंग विंडो। सो इमेज तो दे दिया। नाउ आई विल गो टू व्हाट इज कॉल्ड द पैरामीटर्स। सो कितना पैरामीटर्स है मुझे मास्क करना है, 2 पैरामीटर्स। सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ट्वाइस 2 पैरामीटर्स। फर्स्ट पैरामीटर इज द फायरिंग एंगल 1 आई विल कीप, एंड उसका वेरिएबल नेम क्या दिया था मैंने, तो दिस इज फायरिंग, मास्क एडिटर है, उसमें मैंने 2 बार इसको क्लिक करके यही 2 विंडो आ गया। फायरिंग एंगल 1, उसका वेरिएबल नेम है ये। ओके, सिमिलरली आई वांट द फायरिंग एंगल 2, उसका है B। ओके,
So then if you want to initialize it, you can initialize, give some parameter. Say if you have a capacitor or something, you want to give an initial value. Documentation also, this is some like rectifier or कुछ भी आपको देना है, you can give the values here. कुछ भी देना है, you can give it. So this thing, so ये आपने initialize कर लिया, parameters दे दिया, and this. So just apply and OK. Okay, so now we have applied it. Now just double click on this. A window will open. Okay, and now it is asking me, when you double click, that circuit didn't come. Now it is asking me what is the firing angle 1 and what is the firing angle 2. So firing angle 90 degrees है तो कितना है? 5 milliseconds. Okay, and similarly if it is like for second thing कितना देंगे? 5 milliseconds है तो second test के लिए 0.015 15 milliseconds is it? 10 plus 5. So 1 2 3 15 milliseconds हमने दिया है. ये जो values हमने यहाँ enter कर लिए, जो हमने rectifier दिया है और all the parameters, everything is coming here. Just apply OK. Okay. So now I have just clicked OK. Now when I run it, that 90 degrees का output आना चाहिए. You can see here now the firing angle has increased. वो 90 degrees हो गया. Because यहाँ से firing शुरू हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका around 90 degrees. यहाँ से शुरू हो गया और यहाँ 90 degrees, and only this half cycle, half of the thing you are getting as output. Okay, so you can try this. You can just have different values and you can do it. Okay, so next is, I was telling you something about embedded block. Okay, embedded block sir आके आपको पूरा करवाएंगे in depth में, but in this how to add embedded block, that is also there. So उसके लिए हम जाएंगे, say Simulink library. Okay, this is the Simulink library. There in Simulink itself you have user defined function. In this user defined function you have number of functions called the S function, MATLAB function, this ordinary functions are there. So this S function and all, tomorrow it will be covered for you. Embedded block, embedded function will also be covered. Now we are just seeing the MATLAB function, this one. Okay, this is also an embedded function only. So add this to untitled. This is a embedded block. MATLAB function block. Okay, yes, function block double click कर लिया. When you do that, you can do the coding here. आपके पास जो भी codes हैं, if you have GA, you have PSO coding, you have any neural network, every coding can be done here. So उस code के लिए आप जो GA लिख रहे हैं, उसमें जो inputs हैं, that you have to define, and what is the output, you have to define it properly. You can even have the program in .m file there also, and then you can call it here also. Okay, so for example here, let me take two inputs. I am going to give two inputs to this program. So मेरा एक है U1 is my input and another input is U2, and let there be two outputs. So मेरा दो output है, one is Y1 and my second output is Y2. Okay, can you understand this? मैंने क्या किया, embedded block डाल दिया and उस embedded block को double click कर दिया. One window has opened. This is my M file. Okay, आपने script file morning लिनी मैम ने भी दिखाया होगा. Same script file is coming here. So in Simulink also you can add block sets. Okay, so here if you see two inputs we are giving, that is your U1 and U2 are the two inputs, and Y1 and Y2 are my two outputs. And जो भी codes यहाँ लिखना है, you can write it here. So let me simply define my Y1 is equal to U1 into some 10. That is my Y1. And what is my Y2? Y2 is equal to U2 into, let me keep it as some 1000. 1000 से U2 को multiply करके मेरा Y2 हो गया, Y1 भी U1 into 10. So दो input आ गया, मेरा output define हो गया. So now I am just closing this. When I closed, what happened? कि मेरा जो दो input है U1 and U2, ये आ गया, and दो output है Y1 and Y2. So इसको जो input देना है, let me give it. Simply I am giving from here. आपके program में आपने जो program किया है, okay? So it may be a tank system. You want to control the tank, so controlling parameter may be your input. You can make any closed system, anything you can do.
So you can just, I am giving the 2 input to this, so it will go into this software, it will go, जो run करते समय real time में जो parameter जा रहे हैं यहाँ चले जाएगा, and it will give you the output. If you have put a GA program, the input parameter will go, the GA program will run, and it will give you the output here, and that output you can take and connect it to any closed loop system. Okay, here I am just seeing the output in the scope. मैं scope में जाके sync में जाके I am just taking a scope here output, and let me see the output here in the scope. So I have 2 parameters. So let me connect 2. So I have connected here a scope. I showed it fast because we are going out of time also. And the other thing is scope you have already known. I have told you how to do it. So I think you know it. Okay. So now just connect Y1 and Y2 to it. And now just run this block. And you can see the output here. Okay, actually the current directory should be some other directory. Actually वो bin में one burn नहीं करेगा. That was a problem. Okay, because when it runs, it wants to store some files. So it MATLAB current folder should be some other folder. It should not be the bin. MATLAB का original folder नहीं होना चाहिए. It will not allow any program to go and burn. So just see what is the error coming, and if you correct it, हो जाएगा. So this is running now. It should run. So this is one very helpful embedded block is very helpful because जो भी आपको codings डालना है, you can put it inside this. So you can see here, this is the output you're getting. Here it is around 10,000 से हमने multiply किया है, and this one was the other thing. So now how will we take this to the workspace? And if you want to plot, I was telling you when you want to publish a paper, your work should be in a clear format. So how to take it? One thing is, say you can even use this multimeter, and multimeter से भी आपको output आ जाएगा, वहाँ से भी आप जाके उसकी parameter ले सकते हैं. Or you have something called two workspace. Two workspace is in the sync. Yeah. So in this sync, if you go, so ये जो sync है, sync में two workspace का block है. So I am just taking that block and putting it here. Okay. So here I just want to take both the parameters at one एक ही end में, एक ही time पे दोनों parameters लेके जाना है. तो उसके लिए sorry ये connect ही रहने दो. उसके लिए let me take a marks. Okay, दोनों parameter को मुझे एक ही time बाहर लेके जाना है. So here if you have to go inside the sim out, go inside, you can give any name you want. So let me keep the name as AAA and infinite decimation. Here also you see the decimation is there. When you're taking out data, this where it will be helpful, I tell you. When you're doing neural network or when you're doing fuzzy logic, आपने आपका simulation कर लिया. Okay, ordinary simulation without any controller, fuzzy और neural controller के बिना आपने simulation कर लिया. उस data को लेके अभी आप train करना है आपकी neural network को. So when you're running the simulation, there will be lakhs and lakhs of data generated within 10 seconds or 1 minute which you're giving. So this data, you will not be able to load it in the Excel. ये data बाहर लेके जाना है ना, workspace में लेके जाएंगे, workspace से आप Excel में लेके जाएंगे और उस data से you will be training your system, neural network fuzzy. तो उसमें इतना data your Excel will not load. हमने भी रियल टाइम में किया है, इवन रियल टाइम सिस्टम में भी लोड करते समय रियल टाइम डेटा भी ले लिया, एक्सेल विल नॉट एक्सेप्ट. सो देयर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमूव सम डेटा एंड ओनली लिमिटेड डेटा यू हैव टू गिव. तो आपने से लास्ट में 1000 डेटा आपने रिमूव कर दिया, व्हाट विल हैपन, लास्ट में जो ट्रांसिएंट हुआ है समथिंग यू विल नॉट गेट इट. इन दिस केस व्हाट यू कैन डू, यू गिव अ डेसिमेशन ऑफ 10 और गिव अ डेसिमेशन ऑफ 100. व्हाट विल हैपन, 100 सैंपल्स में इट विल टेक 1 और 10 दे दिया, 10 सैंपल्स में एक डेटा देगा. सो नाउ the number of data stored in your workspace also will be less, so that easily you can take it into your neural network of fuzzy logic. Okay, so if you want, you can give your decimation.
So let me give the decimation of around 20. So that only less data is going, that also we will try. So here you have to go, you can see the block. I'll just once again show you this. This is the sync block parameters में workspace में data लेके जाने के लिए I have defined the variable name, then the decimation I have defined, and then what you have the save format. Go to structure with time. Here also you are going to structure with time and apply. So that is what you are doing here. Okay. Now I am just running this program. So the data will go to my workspace. चले गया होगा. So here you can see this AAA. So हमने AAA save किया है, that parameter has come to my workspace. Okay. तो उस workspace को मैं double click कर रही हूँ. तो AAA जो parameter है, it has come here. It's having time, signals, जो भी signals हैं, 2 signals was there. So I'm just clicking on the signals. Once again I'll show you. मैंने AAA में click किया था. I got the parameters here. You have time, signal and blocks. I'm just clicking on the signals. So I get, once I click signals, I will get values and dimension and label. Once again, I'm clicking on this values. So my values, जो भी values हैं, same thing. And once again, so दिखा रही हूँ long view से. You have time, signal and block set. I just clicked on signal to get value, dimension and label. Click on value, get the values here. Okay. Just now click on the first block. तो ऊपर 1 लिखा है, वहाँ क्लिक करो, पूरा ब्लॉक सेलेक्ट हो जाएगा. Then again shift press कर, control press करके again 2 में क्लिक कर ला. Second data will also get connected. Now just plot. तो आपका जो भी प्लॉट है, यहाँ प्लॉट आ गया. The problem was there हमने 20 डेसिमेशन दे दिया, वो ऑटोमेटिकली वेव फॉर्म बहुत डिस्टॉर्ट हो गया. तो वंस अगेन यहाँ डेसिमेशन हम कम करके ले लेंगे. So I've gone to A, I've gone to the signals, I've gone to the values, and I'm just selecting both the values and I'm just plotting it. This is the waveform which I am getting here. Okay, so this is 2 waveforms we have to get. We have got only one. I think one of the values is very small value. Comparatively, this is 35 and this is something very high. That's the reason it is coming like that. We can see that also. यहाँ जो आया है, now what you can do it, go to edit, figure property, okay, and here also same with before, as I told you can go change the thing and you can just make the grids connected. You can give the legends. You can go increase the thickness. All these things can be done here. You can do the rotary also. You can just go and try it. All these things you will be learning by yourself. You will do it well like this. Something. Here if you see that one parameter has gone very low. Okay, तो इसको भी हम लेके आना है. इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं. What you can do is, तो हमने यहाँ command दिया है, plot command. Okay, this plot command you can see here. इसको x axis में और y axis में दूसरा लेके आ जाएगी. So that उसकी command क्या देना है? तो plot ही है, plot y and this is the value. So ये value देखने के लिए
हम क्या कर रहे हैं इसको करके क्लिक करके देखो दिस इज योर a dot signal dot value कैन यू सी दिस ये जो हमने सेलेक्ट किए हैं उसका वैल्यू है a dot signals dot value colon comma 2 दिस इज द वैल्यू copy this control C just copy this yes sir We are not getting you properly. There is noise on the screen. okay you're getting noise and you want me to repeat it We are not getting you properly. There is some actually noise in the screen. they're not getting it clear. Kuch distortion aa raha hai. 1 second sir now is it clear can you get it now No, madam. It is honestly there's some distortion in the screen. distortion is there तो आप एक बार आपकी विंडो रिफ्रेश करके देख लेना Okay. और the other centers can you get it other centers any problem clear है Hello. yes sir can you get it clearly Arun, can you get it Hello. yes sir is it clear We are from Rajasthan Technical University, Kota. Yes, sir. We are also not getting clear voice for the past 4-5 minutes. 4-5 minutes 4-5 minutes. Voice is coming, but noise is also there. now is it clear now Yes, is it clear little clearer, but very small noise as well. can you hear it now Yes. now it is okay is it Yes. so should I start like the data transfer to the workspace shall I start it from first okay how to day or should I tell you the embedded block also should I start from embedded block or should I start from the to workspace You should start from workspace. so embedded is clear Yeah. okay so embedded block was clear because embedded block just डालना है और आप उसको डबल क्लिक करके you have to go and give the u1 and u2 value and the output जो output मिलता है आपको that output should be in square bracket just remember that and जो input है cursive bracket में होना चाहिए okay so this is the thing and you will click and you will get it अब उसको just run ही करना है next is to workspace once again I am repeating it whenever you want to take the data to the workspace you go to the library and there in this sync you have a block called to workspace so just put that block on your window on your model window so now I want two datas to go into my workspace so now what I'm doing I'm going to the library I'm going to the commonly used block and there you have something called the mux so multiple data I'm taking and giving it to a single input single output so now I'm just connecting मुझे दो data वहां जाना है एक है y1 और मेरा y2 to workspace so मैंने उसको workspace में connect कर लिया now what I have to do double click on my workspace so workspace में जब मैंने double click कर दिया यहाँ जो sim out का data है you can give any name say ABC I am giving a name called ABC and now you have something called decimation here so I was just telling the participants here what is decimation decimation is say whenever you want to take data to train your neural network or fuzzy logic you have a large amount of data being generated by this MATLAB when it is running. Every second it takes a lot of data. Every millisecond it saves the data. So in that such a case, when you are taking data, when you want data to train your neural network, your data will be in lakhs and lakhs, and that cannot be easily loaded to your
Excel. In such a place, what will in such a case, what will happen? Your Excel will not get loaded and you will not be able to take it. So in that case, you have to delete some of the data. So when you want to delete data, you will be going to the end or at the starting you will delete. So some of the real-time parameter which you really want will also get deleted. So in such a case, you can give a decimation of say abhi 10 or 20 and you can limit it in such a way that your waveform is not distorted. You can try with different decimation. So here I am giving a decimation of 2. And one more thing which you have to remember is go to this save format as structure with time. आपका जो फॉर्मेट है वो स्ट्रक्चर विथ टाइम होना चाहिए. सो हियर यू कैन सी मैंने एबीसी पैरामीटर्स दे दिया, मेरा डेजिमेशन 2 है और सेव फॉर्मेट इज स्ट्रक्चर विथ टाइम. जस्ट अप्लाई एंड ओके मैंने क्लिक कर दिया एंड it is saved now. Now what I will do, I will just run this. When I run this, automatically the data goes to my workspace. So my workspace, this time I gave the thing as ABC. Okay, so I think you can see this ABC is the name which I gave. Just double click on that ABC. आपको side में time, signals and blocks open हो जाएगा. Okay, in this window you can see this is time, signal and block. Okay, so now इसमें मैं again I am just clicking on my signals. So 2 signals हमने दिया है, वो 2 signals यहाँ आप देख सकते हैं 429 into 2. So these are the 2. 429 डेटा यहाँ आ गया है. पिछले केस में कितना था? 858 था. So now you can see memory usage भी इस केस में less है. 858 डेटा था इसमें और हमारे ABC के केस में only 429 data is there. So this data easily you can take it to your neural network or anywhere to train the system. So now I'm just clicking on the signals, then values come 429 into 2. So usko again I am clicking. So these are the 2 values of my system. So इसमें मैं क्या कर रही हूँ इसको, so इसमें फर्स्ट ये 1 में कनेक्ट कर लिया और सेकेंड 2 में भी क्लिक कर लिया एंड प्लॉट कमांड कनेक्ट कर दिया. सो दिस इज माय प्लॉट एंड प्लॉट में भी जाके मैंने व्हाइट बैकग्राउंड किया. वो फर्स्ट टाइम नहीं आएंगे, आप वो व्हाइट बैकग्राउंड कर दिया तो ये आ जाएगा. देन आई कैन जस्ट क्लिक एंड मेक दिस 2 एंड इसका थिकनेस भी मैं इंक्रीज कर देती हूँ. 2 कर लिया. देन आई कैन कनेक्ट द ग्रिड. इफ आई वांट आई कैन कनेक्ट द ग्रिड. So, and many IEEE papers they say they want it in this format with Excel label. And here also say अभी 450 है आपका. जो 450 है it is the samples taken. It is not the time of running. So in case of if you want it with respect to time, आप क्या करना है, यहाँ जो T out है, जो T out मिला है 854 is for A. Similarly ABC के लिए भी आपको time मिलेगा होगा 429 डेटा के साथ. That is your time. So you can plot it with respect to time also if you want. ABC dot time दे दिया तो ये जो डेटा के across you can do it. So ABC dot time. So we will just plot it in 2 axes. That is what we were doing, is it? So plot YY and यहाँ one second. ये मैं डिलीट कर लेती हूँ, मैंने पहले लेके रखा. अभी तो ABC का डेटा हमने लिया है. ओके, सो दिस इज द थिंग प्लॉट कमांड. सो आई एम टेकिंग द सेम प्लॉट कमांड. इस प्लॉट कमांड में अभी हमको क्या चाहिए, 2 एक्सेस चाहिए. सो YY प्लॉट YY ABC डॉट सिग्नल्स वैल्यूज हैं. सो उस प्लेस में हमको क्या चाहिए, वेव फॉर्म. ये जो ग्रीन वेव फॉर्म है, सो ग्रीन का क्या था, ABC डॉट सिग्नल्स डॉट वैल्यू :2 एंड हमारा 1 का क्या था, वहां :1 है. सो मैं इसको कॉपी कर रही हूं. ओके, उसको कॉपी कर दिया मैंने और आई एम टेकिंग इट टू माय वर्क स्पेस. सो दिस इज वेरी सिंपल. हम कोडिंग लिखते समय इसको एवरी टाइम टेक्स्ट आना है, लेबल करना है, उसको यू हैव टू राइट अ बिग कोडिंग. आपने एक बार यहाँ लेके आ गया, एवरीथिंग इज सिंपल. तो व्हाट यू कैन डू इज प्लॉट YY एंड यहाँ आपने आपका जो वैल्यू है वो दे दिया. So this is 1.
इसके पहले with respect to what you want to do, ABC dot time है ना, was it time? It was time, I think. ABC dot time comma ABC signals dot values colon comma 1. So this will give you your first graph. अभी second graph भी plot करना है. So second graph क्या था? Same thing. Once again I am copying it. ABC dot time ABC signals value यहाँ क्या करेंगे? 1 के place में मैं 2 कर लूंगी. So मेरा second waveform will come. So after this I am just deleting these things which was already there because those things I don't want. So यहाँ तक मैं इसको delete कर दिया and simple कर दिया. जो ये display है and all those things color करने वो उसका था. So what I have done now, it is a very simple plot y by ABC dot time comma ABC dot signal dot value colon 1 similarly colon 2 and now it should give me the correct thing. So now you can see here. Can you get it? आपका क्या हो गया? दोनों different axis में चले गए. X axis में एक आ गया जो दूसरा Y axis में चले गए. Now again you go and do whatever you want. आपका दो इसका thickness कर दिया. If you want इसको आप color भी change करके red करके इसका thickness बढ़ा देंगे. So now when you want to compare it, when you have multiple graphs and when you want to compare it, you can do all these things. Okay, so इसका label करना है, इसको X grid करना है, all this. This will be very useful because once when I send a paper also, मेरा एक axis बहुत कम था और इतना कम भी नहीं था, it was normal. But still when it was an SCI journal, they have asked me, it should not be there, you make it into different graphs. So when Simulink, suddenly when it came to me, I was just trying and that time I found out ki, okay, in Simulink also this plot command when you go, because this is very simple. When you want to change the color, when you want to label it, when you want to add grid, here it is very simple to do it. Apart from, on the other hand, there if you see on plot command when you are writing. So even when you have data also, say आपके पास बहुत सारा data है, आपने real time data ले लिया, Excel में लेके आ गया, उस Excel के data also you come and just paste it in this workspace. Here in this workspace you just come and paste it and just give the plot command. There also you can go and do the variation. So now in my thesis also when I was doing, I had some data from DSpace. So DSpace will come in the control desk. Or when you have it in Adreno or कुछ और इसमें Xilinx में भी जो काम कर रहे हैं, you will know, you will have the data in some other real-time window. So from there also take the data, you will get it in the Excel or CSV format you will get. That you come and paste it here and just plot and you just change the color and all. It will give you a very good appearance and it is very simple to do it also. This command is very simple. You can do it. Okay, so this is about your plot command. Okay, and there are a lot of things which you can do with this Simulink. And with this I'm stopping because it is 4 o'clock also and I think all the other centers also till 4 o'clock only we have given time. And our participants here can go to the lab and today morning and afternoon जो भी हुआ है you can try it. It is very simple. You can even connect your like internet में भी जाके देख के step by step इसका जो भी procedure वहाँ किया है same thing. And if you do the thing which I gave you now, पूरा आपने कर लिया, make a subsystem, sorry, take the rectifier, then you make the subsystem and first after making the subsystem, do the masking of the subsystem. Sir, uska mute kar dena. They want to ask some questions? Okay. Okay, sir, after you want to ask me something? No, madam, it's okay. The session was very good. Yes, sir. Yes, sir. So I just want to tell you, you go to the lab, just take the rectifier. Try to rectifier को तो मैंने clearly first explain कर दिया कि firing pulse कैसे देना है. I think you will not forget it. Is it? So first make the rectifier, make the subsystem, mask the subsystem, and one more thing I forgot to tell you is the go-to blocks. वो भी finish कर देती हूँ so that this will get over. 1 second I am taking of yours. Just go when you want to see the say इसको double click करते समय ये window open हो रहा है ना. So now what I am going to do is I am just right clicking and going to look under mask. So हमारा original window आ जाएगा. इस original window में now you can see here out blocks are there.
ये मैं क्यों बता रही हूँ कि when you go for demos and see that this block many times you see and you will get confused. What is this? So only 5 minutes I'll take. I'll just tell you this also. ये जो out blocks हैं, I am just deleting it. Okay, out blocks when I deleted it, you can see here, इसका connection चले गए यहाँ. ये इसका भी connection चले गए और यहाँ का भी connection यहाँ से चले गए. But data यहाँ अंदर से data बाहर लेके मुझे आना है. I want to bring my data from inside the subsystem to outside the block. So I will do something called go-to blocks. So go-to blocks are available in signal routing. Signal routing में आप चले गए, you will get something called the go-to blocks, from and go-to. Okay, so just go-to को click करके add to untitled, इसमें मैंने go-to block add कर दिया. Okay, so now I am just copying one more go-to block I want. I connected one more go-to block. So this is also important feature which you require. So मैंने दो go-to blocks कर दिया. Same way I will connect the from block to my main block. वहां से ही लेके from block भी आप Control C, Control V करके मैं इसको यहाँ भी कनेक्ट कर लूंगी और यहाँ भी कनेक्ट करूंगी. So आप डेमोज में भी देखते समय ये ऐसे ब्लॉक्स होगा. So now what we have to do is we have to label them. इसके अंदर डबल क्लिक करके you can see here the go to tag. You give any name, ये भी दे सकते हैं और मैं small a लिख दे रही हूँ. और very important thing is you have something called local here. So you have to define this as scoped or global. Scoped कब हम define करेंगे? What is scoped? When your go to parameter should go from one subsystem into another subsystem. Okay, it should not be globally declared. Like globally नहीं दिखना है, एक से उसके next subsystem में जाना है. You go for scoped. Okay, scoped करते समय हम tag करके चले जाएंगे. उसमें block से एक tag block डाल के जाना है. Otherwise you can declare it as global. Global है तो outside the window also any place you can see that. And now you just click OK. Click apply. Okay. Similarly for the other case also I am just giving B and उसको भी आप locally यहाँ locally रहने दो आप you will understand, you will not get that parameter there. So now if you go and click here, आपने इसके लिए आप देंगे a small a variable and update the tag, apply. When you apply it you can see here untitled, a link automatically आ जाएगा. उसको click करते समय automatically it will go to the place where it has to go. So यहाँ आप click करके इसको click करके you can come out here also. Okay, but now here what was the name I gave? B. B करके इसको update take करके apply कर रही हूँ, यहाँ नहीं आएगा because it is not globally declared. Can you understand? It will not be highlighted. So that's why you have to go look under mask, यहाँ click करके you give it as global, apply, okay. So now it is globally declared. So now if you run it from here, if you click it, automatically the data will go here. So many times in demo also you will see कि ये block कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं चलता. Just double click on it, it will show you where to go. Okay, so this is one thing. Now if you run it, automatically you will get the data. Okay, so this is one thing. Go to you have to do and see. Then do the masking and see to how to mask the subsystem. Okay, so similarly जो data आपने वहां से लेके आए to workspace भी data लेके आके उसके Excel में भी लेके जा सकते हैं. Okay, so उसके लिए command है save. जो भी आपको save करना है, जिस नाम पे save करना है, से मुझे शिमी के नाम पे save करना है dot xls and किस variable को save करना है. For example आपने कुछ हो इसमें तो उस फॉर्मेट में कुछ भी नहीं है, से टी आउट है तो आई वांटेड टी आउट को सेव करना है, टी आउट एंड उसके लिए माइनस ASCII के फॉर्मेट में सेव कर दिया. तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर न्यूरल नेटवर्क. आपने सिमुलिंक से डेटा एक्सेल में लेके आ गया, उस एक्सेल के डेटा को आपको फ्रॉम सिमुलिंक यू हैव ब्रॉट द डेटा टू योर वर्कस्पेस से आपको एक्सेल में लेके जाना है. So Excel के डेटा को लेके you will be training your neural network. Okay, so that place also this command will be helpful. So अभी save हो गया. ये जो current STC MATLAB में जाके मैं ये shimi.xls से सर्च किया तो आपको मिल जाएगा.
So Shimi MATLAB is in. So I think Shimi. Yeah. See here you can see the Excel file. Automatically वहाँ just command देना है. I'll just once again show you the command. So यहाँ data आपको Excel में मिल जाएगा. This is also useful because I forgot to tell you because neural network करते समय कैसे डेटा आपने लेके आया है वो पता होना चाहिए. So आपको पूरा डेटा यहाँ आ जाएगा. Okay? So this data you can take it to neural network and train it. Neural network में डेटा आपको either Excel में होना चाहिए और Notepad में होना चाहिए. Only two types of data you can load it from the toolbox or any system training. So this is how you take the data to Excel. So once again I'll show you the command. It is very simple. Workspace से आपको टू वर्कस्पेस डाल के आपने वर्कस्पेस में तो डेटा सिमुलिंग से लेके आ गया और आपके पास रियल टाइम सिस्टम है हार्डवेयर रन करके भी एक्सेल डेटा है यू कैन ब्रिंग इट टू दी एक्सेल में डायरेक्टली भी लेके जा सकते हैं अदरवाइज वर्कस्पेस में भी लेके आ सकते हैं और वर्कस्पेस में जो डेटा है यू कैन सी दिस टी आउट जो दिस टी आउट डेटा ओनली मैंने बाहर लेके गया ओके सो उसको कैसे लेके गया है द कमांड वाज सेव किस नाम पे सेव करना है shimi.xls किस वेरिएबल को सेव करना है मुझे ये टी आउट सेव करना है टी आउट एंड किस फॉर्मेट में सेव करना है माइनस ASCII जस्ट दिस कमांड यू गिव जो भी डेटा हमारा एक्सेल में है इट विल गो इनटू योर थिंग ओके so this is very simple these things you have to remember till the end of the class हार्डवेयर करने तक ये पूरा आपको चाहिए how to make a subsystem how to mask a subsystem, how to add go-to blocks, okay? Then how to take data from two workspace block डाल के how to take it to workspace we learned today. Then we learned how to add embedded block in Simulink and take the data. Embedded block देखा था. Then how to save data to Excel. These things are very important. So I want you, those who have brought laptop, you can go to your lab and do it in laptop. Those who are not having laptops, go to the machines lab. Machines lab की just opposite में instrumentation laboratory है, where MATLAB is there. You can just go and practice that till 5:30. The labs will be open for you. Okay? Thank you.